How are you? Hi Ishank, I'm good. How are you? How's Sunday? Good, good, good. It's great Sunday. It's always podcast shoot weekends for me. How's yours? How's yours? Just same, like looking forward to it. Generally, I keep my weekends also for these things, where I'm sort of preparing things for the upcoming week or excited to take up some new projects, things like that. Sure So, thing, yeah. sure thing. So, we were discussing this off camera about the digital addiction and well-being. So, आजकल Hmm. phones में भी आ रहे हैं digital wellness and well-being softwares to just coordinate with your personal life and to just align your screen time. But is it an illusion that we have created ki, hey, I have to just stop using phones, having a digital detox, or is it a necessity and how it is affecting the wellness, first of all? So, I very much resonate with what you just said, like how, the digital world that we are living in is impacting our everything. And when I say impact, mind me, even when people are talking about impact, it is generally negative connotation में ले रहे होते हैं, right? However, I think one major reason why even I thought this podcast is, necessary is to help people understand screens are not our enemies, right? Internet, digital platforms, these social media platforms are not our enemies. How about, let's understand about them, how they impact us, and then yes, take calculated steps. Because yes, I think 100% of humans existing will agree on this key. Today our life is dependent on it. It cannot be, avoided, ignored, neglected. जो भी सारे नेगेटिव वर्ड आप यूज कर लो, हटाना है, वो पॉसिबल नहीं है. So I think it definitely taps upon our emotional well-being, our relationships that we are living in. If I'll take a step back and explain it from a psychological angle, generally हम overall well-being को we categorize it under four pillars: psychological well-being, emotional well-being, relationships, and financial well-being. All these four pillars are affected by the lifestyle, the digital lifestyle that we have. So yes, we will be impacted by it. But let's dive into a little more deeper discussion and see Hmm. what are some ways how we can balance it better. Right. So, if you can highlight more of a emotional and psychological well-being in terms of digital habits, because right now what is happening, बच्चे PS5 खेल रहे हैं or just going towards their own world of their COD, Clash of Clans, and Mm, other digital games. Um, People, especially Gen Zs, are more into using Snapchat or social media mm, applications. Plus, more of even many Gen Zs are using Reddit and other digital platforms. And the screen uh, time is very high. Like all mm, the social media patterns directly correlate to age bracket from 18 to 40, कि how to make them more as their DAUs, that is daily active users, कितना time उन्हें spend करा सकें, so mm, that हम उतना ही ad दिखा सकें, right? And that's how capitalistic economy works. आप social media पे रहोगे, definitely. you will be on the social media, you are just scrolling reels. As a business owner, I will target you and give you an ad and give you an offer about it, like 60% off on my kurta, 60% off on my watches, something like that. Right. So when we are doing that, Right. like the economy also gets boosted, but the screen time increases at the end. So this digital habit patterns, how do you think is impacting every age brackets like wellness? Yeah. Mm. So yes, again, even when I was doing my courses and the research and all, these digital apps are designed in that manner ताकि वो आपको addicted रख सके. Like they make sure the colors that they use, ठीक है, the features that they have.
In fact, even, again, digital mein everything is counted. So the cartoons that you'll see for kids that are designed these days, the colors that they are using is something that is, designed in such a way that it keeps the kid addicted. Okay? So yes, the design of these things, as you mentioned, capitalist world is becoming capitalist. So business advantage ke liye they are doing these things. Now, if you talk about how it is, how our emotions get impacted, I will give you a very simple example. I'll try to use as much examples as possible so that people can relate to it कि हाँ भाई ये मेरे साथ होता है. ठीक है? Okay, there is something called as phantom vibrations. ठीक है? People who are working in the corporate can relate to it. In fact, even I experience this a lot of times. We have our Teams ping, है ना? Teams का there is this particular tone when somebody is calling you. Okay, yeah, every person has their own ringtone of the phone. You will see a lot of times when we have consciously made this effort कि मैं आज अपना phone नहीं use करूंगा, ठीक है, या I'll not use my laptop. That device is shut and kept in a room. And let's say you are sitting in the hall, suddenly you will start feeling कि my phone is vibrating, or you can just hear in your sleep that Teams ka ping, Teams ka calling noise. All of these things are touched under phantom vibration. So our brains are hyperactivated, and this goes for every age group. This is something that goes for every age group. You'll see kids, they are not playing COD, ठीक है, किसी time पे, but still they'll feel that that जो music they use, that sound in their background, it's Hmm. constantly running. One is that. Second, I think that remains common in all the age groups is attention span has changed. ठीक है? Okay, when I say attention span, again, information is available एकदम fingertips पे. Okay, I'm seeing red color. I'll put something about red color. I'll see, acha, in, let's say, what happened just now. What was the fashion show? Met Gala. ठीक है, Met Gala में हूँ वो रेड. ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव वाज समथिंग एल्स. रेड कलर के बारे में रिसर्च करना था. नाउ आई एम लुकिंग एट मेट गाला, देन मेट गाला से किसी दूसरे मॉडल का ड्रेस, देन समथिंग एल्स. माय ऑब्जेक्टिव चेंज्ड. देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. देखो, जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज नॉट सो easily accessible, these questions ka answers I would just put it on a paper and take some time to visit the answers. उस सेंस में अवर अटेंशन स्पैन हैज बीन इम्पैक्टेड, क्योंकि अब मैं एक चीज पे ज्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहती, मैं कर ही नहीं पाती. ठीक है, प्लस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज हैपनिंग कि ओह आई हैव अ क्वेश्चन, ओह फाइनली आई फाउंड द आंसर जस्ट इन अ मिनट और इन फ्यू सेकेंड्स, थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, अनदर थिंग हाउ आवर इमोशनल और आवर सोशल well-being aspect gets impacted is we are losing that sense of uh, touch with people. ठीक है, a lot of times we are on calls, we rely on WhatsApp messages. Human beings are designed to be social animals, है ना, हमें हमारा belongingness उससे feel होता है when we talk to people. लेकिन cues, एक ना, there is one beautiful model, even if you Google Albert Mehrabian's rule. It says that 55% of our like interactions happen, get impacted by when we see the body language. 38% of it is the tone and the voice, and only Hmm. 7% is the words that we use. तो डिजिटल एरा में ठीक है, अभी बॉडी लैंग्वेज में अभी भी आपका देख पा रही हूँ, आप भी मेरा देख सकते हो. ठीक है, बट इट इज इम्पैक्टेड. मेजोरिटी of our conversations are happening only in that 38 plus 7%, which is not 50% also. So our social conversations, our relationships are now impacted. So I'm just giving you few pointers, because if you ask me, there is a long list of how we get impacted. Right. I'll just give you a use case. For example, nowadays I'm using Perplexity, Claude, Gemini, and GPT all together at a Hmm. large scale for my Hmm. productivity, for my work as well, for my personal life as well. So I've been automating micro things. So what exactly the end goal of mine is to just automate majority of my workflows.
सो उससे होता है क्या, मेरा एडमिन टास्क सो के उठ के जो मैं बेसिकली करता हूँ, जो मैं सोने से पहले अगले दिन का करता हूँ, वो सारा ऑटोमेट हो जाएगा। हम्म और जो डेटा है, इतना बड़ा डेटा मैनेज करना, वो भी नियरली ऑटोमेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स प्राइवेसी की हमने एक तरीके से बाउंड्रीज रखी हैं, बट आफ्टर couple of years I can see that meta AI glasses आ गए हैं, लेंसकार्ट ने अपने AI glasses टेस्ट आउट किए। So when these things are happening ना, so आपकी आंखों पे ही पूरा कंप्यूटर होगा, right? So I can I can literally feel like कि मैं सिर्फ चल रहा हूँ randomly in crowd. I just grabbed a cup of coffee and just clicked the button here and asked Perplexity to search Aman Gupta's assistant number. और वो पूरा ही वेब पोर्टल में जाके मुझे नंबर ढूंढ के दे रहा है किसी तरीके से, and I'm हाँ just saying कि कॉल करो उसे. Now I just called Aman Gupta का assistant and I don't know him, for example, right? वो स्क्रैप करके डेटा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ट्रू कॉलर से और कहीं से भी वो निकाल के मुझे दे रहा है नंबर, और वो खुद ही कॉल कर रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है कि हाँ वो दिल्ली एनसीआर का ही होगा, मुंबई का अमन गुप्ता तो नहीं होगा या फिर उसका असिस्टेंट। सो ही विल जस्ट फिगर आउट थिंग्स एंड जस्ट स्टार्ट हम्म कॉलिंग पीपल until unless it's picked up, and when it's picked up I will just have a call with him. This is happening within minutes, and it is saving time, but it's also scary, क्योंकि जो आपने कहा कि it's something like urgency आने वाली है. Now if I want to reach somebody, if I want to just go towards you can say my friend's house, I can just यहीं से यूज करके मैं पार्सल भिजवा सकता हूँ, मैं कैब बुला सकता हूँ, यहीं पे मेरे सामने स्क्रीन आ जाएगी. एप्पल का जो वीआर आया था, इट्स समथिंग लाइक वेरी हेवी ऑन योर आईज, बट when you see that, if that gets successful in mass scale, you will not see majority of the humans with glasses or without glasses. You will just see them with VRs. काफी स्केरी है कि यहाँ पे डब्बा लगा के बैठे हैं भाई, ठीक है. yes राइट, सो अब पहले तो चाहे लैपटॉप हो चाहे टीवी स्क्रीन हो, इतना डिस्टेंस होता था, राइट? अब यहाँ पे है, हम्म राइट? सो स्क्रीन टाइम तो बढ़ने वाला है एट द एंड, व्हाट आई पर्सनली फील, राइट? totally हम्म Yep. So I will just start towards the next step. That is हम्म कि अगर स्क्रीन टाइम बढ़ना ही है, so बाउंड्रीज कैसे सेट करें उस चीज को लेकर, लिमिटेशंस कैसे सेट करें, एथिक्स क्या फॉलो करें, so that wellness impact ना हो. And हम्म before that, let's emphasize more on how relationship is getting affected with digital like usages. So yeah. so like firstly so I just want to tell you ki haan, all the examples that you gave na meta AI and the VR meta VR and all yes screen time is going to अभी भी ज्यादा हो चुका है ठीक है उस टाइम तो वो और ज्यादा हो चुका होगा and now connecting it with relationships and all I think as long as you are using any of the advancements that are happening in the world uh, properly by properly I mean कि देखो कुछ लोगों का हैबिट होगा they will be connected with them with their relatives with their partners with their friends and families using that VR headset ठीक है again people sitting in the US you are sitting here visual connect है ठीक है but कितना लंबा visual connect चल रहा है is it happening like 8 hours throughout the day the duration needs to be kept in mind ठीक है again let's if you ask me uh, how relationships are getting impacted I think everything is getting impacted ठीक है तो let's just talk about रिलेशनशिप के जो एंगल्स हैं है ना अगेन जैसे आई मेंशनड अर्जेंसी वाली चीज वी ऑल कैन बी अवेयर अबाउट द पैटर्न्स और किस टाइप का चेंजेस टू एक्सपेक्ट सो वन ऑफ दोस थिंग्स वाज दिस कि अर्जेंसी बढ़ेगा अभी भी बढ़ा हुआ है अब और बढ़ेगा तो
we'll be at a more what do you say? We'll be at a position where we can take more calculated steps in the sense मुझे पता है कि urgency है in general भी ठीक है how about I purposely put that alarm clock in my own head कि ठीक है if I have let's say message ईशांक ठीक है अगर मैसेज नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम रिजेक्टेड ठीक है इसका ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि ईशांक इज ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स right having that mindful conversation with yourself is something that is suggested if you want to maintain your relationships वरना ऐसे तो if I have 10 people in my life मैं सबको एक सेकंड में रिप्लाई करूं humanly it's not possible right किसी ना किसी को तो कभी ना कभी वेट करना पड़ेगा ना so rather than taking it personally कि this person is rejecting me or hi why am I not receiving the messages hi time निकला जा रहा है अरे हाय पॉज ले लो you know so that apart from that relationships may I think um, some other example if I use to help you understand is why not use the digital ways gift people something if you're in a long distance relationship with your parents with your partner something like that best use कैसे कर सकते हैं ठीक है अब just when we are talking about this something comes to my mind there is a very beautiful movie called Her I think it was Netflix original movie in which there was a protagonist uh, who is a working professional but eventually he gets attached to the AI named Samantha and he is having that heart to heart conversation and the way if he's having a downtime he knows he has somebody he can talk to but at the end of the day now connecting it with the ethics part of it whatever Theodore or the protagonist of the movie was sharing it was all going online ठीक है it was not going public it was not broadcasted in the world but kahin na kahin that data is stored na how can you or I guarantee that tomorrow let's say if war breaks out that data cannot be uh, you know misused या किसी भी इंसान का कोई भी डेटा स्टोर्ड है एंड टुडे इट्स वेरी इजी टू ब्लैकमेल पीपल इवन इफ यू हैव वन लाइनर अबाउट देम people putting everything on social media so relationship with others relationship with self everything is hampered things like that so I recommend people to watch that movie it's a Hmm. very beautiful movie where they can understand how the emotional impact gets impacted when we talk about relationships we get to know more about ourselves we also get to know कि हाँ AI का ये भी एक skill है where we can get attached to it so much that tomorrow when we get to know कि okay Samantha was talking to 10 other people it makes us feel like breakup और भाई वो actual breakup नहीं है हाँ. so what we have to do is be ready with the repercussions know about what AI is or what technology is so that we take calculated decisions yeah Right. And when you stated about this AI girlfriend part, in India as well, many people from age bracket of 20 to 28 are getting AI girlfriends. That is a virtual AI assistant. पहले जो होता था, now they are Hmm. converting it to AI girlfriends or making something like that, especially techies. Hmm. Cause it's there inside कि she is available whenever I want. Now she is coded like that कि मैंने ही Hmm. किया है या फिर किसी और ने किया है कोडर Hmm. ने किया है so she understands and empathize more ठीक है मुझे ओपिनियंस नहीं मिलते सामने से मुझे जजमेंट्स नहीं आते सामने से Hmm. थोड़ी एम्पैथी आ जाती है भले ही वो टेक्स्ट में आती है ठीक है टेक्स्ट के थ्रू आ जाती है वॉइस के थ्रू आ जाती है बट आई नो इट्स एआई बट इट विल फील मी लाइक आई फील सेफ Yes. it felt like it's something mine Mm, राइट सो ये दो चीजें होती हैं थर्ड की कॉस्ट इफेक्टिव है आई डोंट हैव टू गो टू डेट्स exactly. so that's their thing and I would not say that's wrong or right that's their good opinion right now कि हाँ पैसा बचा रहे हो अच्छा है और एआई है Yes. बढ़िया है you are experimenting but
after couple of years, when you get habitual to that particular AI, you will disconnect with the humors that you live with. Exactly, exactly. एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है बहुत ही कि ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा, इसने एआई ने तो ऐसा किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, बल्कि मैंने इमोशंस तो सेम ही कॉपी किए थे. Intelligence is on sale, not emotional intelligence is on sale. Every human have its own feelings. सबका अलग अलग है फीलिंग्स का हिसाब किताब. सो इमोशनल इंटेलिजेंस कोई नहीं छीन सकता इंसानों से. अभी तक एआई तो नहीं, जब एजीआई आएगा 10-15 साल बाद तब बात करेंगे, बट अभी एआई इज good for admin tasks, automations, but not emotional capacity. yes. Yep. But So I what? think like even Yeah. in future also emotional capacity के हिसाब से AI is not the best. Like Hmm. as per my understanding as of now and what prediction I can uh, do. Again, Hmm. मतलब if things change, well and good. But emotional angle say, I'll pick up one point that you highlighted just now. You know, AI sort of responses you the kind of responses that you want to hear. Hmm. ठीक है, तो वही relationships Right. के मामले में it's going to set the wrong expectations. But actually, in reality, that is not true. Agree. So, yeah. So going further, I was just thinking while having a conversation with you, that there is AI, then there is still a lot of digital detox that people need and think about कि हाँ हमारे relationship impact हो रहे हैं उससे. And even off camera also we discussed uh, कि आप 9 to 6 वर्क करते हो. यू स्टेटेड दैट कि 9 to 6 आप वर्क करते हो ब्रेड एंड बटर के लिए लैपटॉप के सामने, एंड एट द एंड ब्रेड एंड बटर ऑर्डर करने के लिए भी आप जोमेटो स्विगी खोलते ही हो फोन से. Yes. Right. So this I loved about this conversation as well कि हाँ यार मतलब एट द स्क्रीन टाइम तो फिर आपके 12 घंटे से ऊपर हो ही गया. Uh, Right. So while having this discussion, um, एक चीज जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में पूछी थी कि बाउंड्रीज की क्या इंपॉर्टेंस आ जाती है. sorry, किसकी क्या importance आ जाती है? I couldn't बाउंड्रीज just बाउंड्रीज की क्या इंपॉर्टेंस आ boundary. जाती है. Okay. Um, ठीक है. Again, I'll use one terminology I really like. Internet or digital screens is like that um, successful toxic relative. ठीक है. You know, देखो at the end of the day relationships क्या है? It's a give and take, right? Successful relative के साथ भी आपको give and take होगा. It might help me in my networking. It might help me in my professional development, things like that. The reason I told toxic is because you know you have to stay in connect with that uncle or auntie, but you also know that this person interferes a lot in my life. Understood? And अच्छा, human angle में again you try to draw boundaries. नहीं हो पाता है. कभी मम्मी बोली कि अरे अंकल का फोन आया था तुम बात नहीं कर रही हो. ठीक है, या कभी कभी मैं खुद बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी जब मुझे पता है कि नाउ इज द टाइम आई रियली हैव टू सेंड हिम माय रेज्यूमे. ठीक है, सो दैट आई गेट रेफर्ड एंड थिंग्स लाइक दैट. डोंट यू थिंक screens and internet is like that? I know it is not benefiting me, but I know there is some benefit. In fact there could be a lot of benefits, but problem बस ये है कि interference बहुत ज्यादा है. मैं उठ रही हूँ, आई एम गोइंग टू माई स्क्रीन फर्स्ट or to the internet first. I wake up in the morning, I know I have n number of things planned for my day. But then doom scrolling starts happening in the morning. I go through the news, I go through the religious hate posts, I go through n number of things, and now my brain is occupied with something else. But I also know this digital screen is going to help me, or this internet is going to help me with other research throughout the day or networking with people. So tabhi I use that terminology ki it is like a toxic successful relative where I know I have to draw boundaries but I'm unable to. ठीक है, so one reason why कि I'm unable to draw the boundaries because I myself know their benefit है.
और वो बन चुका है लाइफ। ठीक है, अनदर थिंग, आई थिंक कनेक्टिंग इट बैक टू द सेम थिंग जो हम इनिशियल डिस्कस कर रहे थे कि दीज एप्स आर डिजाइंड इन सच अ मैनर। ठीक है, नाउ आई रिलेट इट विथ एडिक्शन। ठीक है, इवन इफ यू गो ऑनलाइन ना, आप ये देखोगे, स्मोकिंग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, prefrontal cortex of the brain gets impacted। ठीक है, स्क्रीन के साथ भी अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, द सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट्स इम्पैक्टेड। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज एडिक्शंस, वेदर इट बी porn एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, स्क्रीन का एडिक्शन एडिक्शन नहीं, बट यू नो द हैबिट फॉर्मेशन वाला जो सर्किट होता है ब्रेन में, ऑल ऑफ द मैकेनिज्म रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि बायोलॉजिकली आवर ब्रेन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो चेंजिंग। तो इट इज नॉट जस्ट ऑन अ सरफेस लेवल दैट पीपल टॉक अबाउट ना, कि मैं बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। इट हैज गॉट लेयर्स इनटू इट, एंड देयर आर रियली वेरी कॉन्शियस efforts you have to take to break these habits। मुझे मंडे से जिम जाना है, वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल, मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने लाइफ में एक ऐसी चीज को बैलेंस करूं जो 24/7 मेरे अराउंड सराउंडेड है। जिम तो फिर भी 1 घंटा जाना है मुझे, क्योंकि मेरा ब्रेन का सर्किट वायर ही वैसा हो गया है। So it becomes difficult for us to draw boundaries even after knowing how to draw boundaries। Right. And um, if you say this, कि our buying capacity plus habits are also dominated by digital presence. क्या कंज्यूम क्या कंटेंट कर रहे हो, कौन सी ऐप डाउनलोड कर रखे हो, उसकी बेसिस पे ऐड आएंगे, उसकी बेसिस पे कंज्यूमर हैबिट चेंज होंगी। Even I'll just share one story of my own. हम्म। This was a great insight from me as well. I tested out a lot of systems, daily routines. मैं करते रहता हूँ। होता है ना, 100% परफेक्ट डेली रूटीन नहीं मिलता आपको। ठीक है। हाँ। एक टाइम पे इन 2022 के अराउंड आई हैड दिस पर्टिकुलर गुड daily routine that I followed. And then after that, हम्म। as my age evolved and my habits also evolved, so I tried shifting some habits and just tested out new systems and routines. So there is a system that always worked for me. That when I go to sleep nearly at 12 a.m. or so at the night, I used to have this black night blindfold around me. So it's a cushion type blindfold. You can get it on Amazon, and it's a still हम्म। routine कि कुछ भी चलता रहेगा फोन में, if it is a series or whatever it is, I can still basically वो कान भी आपको ढक देता है, so you will of course listen very less, but you can of course get it and it's properly blinded, so बिल्कुल ही वहां पे स्क्रीन टाइम आपके लिए जीरो है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आई यूज टू वेक अप विद जस्ट नोटिफिकेशन ऑन माय फोन, आई यूज टू जस्ट चेक इट अप एंड देन गो बैक टू स्लीप। नाउ मेरी स्लीप इम्पैक्ट होती थी उससे। सो व्हेन आई एम यूजिंग दैट ब्लाइंड फोल्ड, I am able to sleep much more deeper, and it's easier for me to get into sleep. Okay. हम्म। And when I'm waking up, I follow this key, no phones in the washroom while taking a shower or so. There must be phone away, कि भाई हाँ कोई हम्म। मैसेज बीच में ना आ जाए, कोई कॉल ना आ जाए. When I'm having my coffee, the first coffee in the morning, I will not be using my phone. I'll be using, you हम्म। can say, pen paper to just write something and read a book or read newspaper, like an old man, just reading a हम्म। newspaper with coffee. वही हाँ। even couple of my friends say कि भाई बुढ़ा लगता है अब तो, सुबह 6 बजे उठ के अखबार पढ़ता है। But when you do that, ना, so when you do that, ये screen time के impacts I believe नहीं होते इतने जितने normal life पे होते हैं. These small habits can हम्म। rectify the rest of the day. What do you say? हम्म। Yes, so I think the example that you gave just now was
The next part to your question that you asked about boundaries. Now, नहीं हो सकता है तो समझ में आ गया है. Hmm. But conscious efforts के साथ you can do that. As you mentioned, you started maintaining a sleep hygiene. Hmm. है ना? Something Right. similar, we call it as digital hygiene. And there are a lot of apps also these days that can help you, like literally put alarms to your usage. कि after every so and so minutes, alarm will ring automatically. तो एक वो nudge मिल जाएगा ना कि ओ भाई 5 मिनट हो गए या 15 मिनट हो गए. I should now put an end to my doom scrolling, things like that. Um, Other conscious efforts, especially for kids below 18, I'll suggest this for parents. If keep your, don't yet give access to your kids to iPads. Mobiles ko jayega. iPads ko agar jitna you can delay, that is good. Give them, internet, give them screen time, bring a computer. You can't carry computer everywhere. Things like that. So the more delay you cause in laptops and iPads, better. You have to sit and have that conversation with your kid. For kids, everything is available, every information is available, right? But you as a adult have to sit and have that conversation कि देखो ये सही है ये गलत है, this is how it is going to impact you, this is how this is going to impact you, and for your own benefit we are keeping this computer wala system. ठीक है? और again, one more thing, if you have laptops or iPads given to them, you as a parent have to do your research and make sure to put those blockers, so that kids cannot open n number of websites. Or yes, jab agar due to some educational purpose also, if some website needs to be accessed, that is happening in parents invigilation under their supervision, right? And yes, the more you tell them कि मत screen use करो, वो और ज्यादा करेंगे. आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. Our parents used to tell ये मत करो, नहीं मैं तो कूदूंगी, मैं दिखाऊंगी, मैं रिबेल करूंगी. That is human nature. तो बेटर है आप उनको वो प्लेटफॉर्म खुद ही देना चालू करो. That was for 18 below. When it comes to adults, yes, drawing boundaries may, as you mentioned, ki, your friends also tell you you are like that old uncle. This mindset needs to change. Why is everything related to tum budde ho ya traditional methods? Actually, in the contemporary world, these strategies need to be classified as ye bhi, new solutions to new problems. This is how we will tackle with it, yaar. You can't wake up in the morning and मैं सुबह उठ के देख रही हूँ अरे कल से मेरे को गैस नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रम्प ने बम फोड़ दिया ईरान पे. My whole day will be ruined. ठीक है? I was I am doing this from past a month. See, it's happening with everyone. No, and in Right. the morning there is this thing, the after you wake up in the morning there is certain minutes. I put it as 30 minutes. वो 30 minutes में whatever you feed in your brain, अभी आपका दिमाग जागा नहीं है पूरा. तो अभी आप उसको कुछ भी फीड करोगे ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. Hmm. तो व्हाई नॉट एब्जॉर्ब पॉजिटिव थिंग्स? डू स्क्रॉलिंग, लेकिन फिर देन मेक श्योर दैट योर सर्च हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर आर पॉजिटिव कंटेंट, क्योंकि एल्गोरिथम ऑफ इंस्टाग्राम इज आल्सो डिजाइन्ड लाइक दैट. Hmm. आप जितना एंग्जाइटी का पोस्ट देखोगे भाई वो आपको एंग्जाइटी ही दिखाता जाएगा. इट्स लाइक अरिजीत सिंह का सॉन्ग, आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप बट व्हेन ही सिंग्स इवन आई फील द हर्ट. एल्गोरिथम इज लाइक दैट कि एक एंग्जाइटी का Right. पोस्ट दिखाएगा, अच्छा ठीक है, फिर और एंग्जाइटी एंग्जाइटी एंग्जाइटी. इवन इफ आई एम नॉट एंग्शियस आई विल स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस. तो Hmm. चेंज योर फील. Yeah, एक ठीक तरीके है. से. हम्म. प्लस यस, सी व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू. कि वही मे बी फॉर यू, Right. लाइक फॉर ईशांक इट इज कि आप यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, तो योर रिसर्च आप बेटर कर पाओगे मॉर्निंग आवर्स में. आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ नाइट पर्सन. तो मैं रात को ज्यादा बेटर रिसर्च कर पाऊंगी. यू विल यूज इंटरनेट, आई विल यूज इंटरनेट. बट फॉर मी व्हाट आई हैव टू मेक श्योर, सोने के 30 मिनट्स पहले से आई हैव टू स्टार्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन. डिजिटल डिटॉक्स.
30 Hmm. minutes before you go to sleep. उस manner में you have to keep on experimenting with yourself. So few Right. examples of how we can start drawing boundaries and take those conscious efforts. Understood. Understood. So, when we used to say this कि हाँ मैंने boundary set कर ली and of course एक दिन में तो आपको रिजल्ट दिखेगा नहीं इस चीज के लिए. You बिल्कुल नहीं. you must wait at least 7 8 days if I'm not wrong. I'll say more than that. Yes, how's the process works? Like if I decided to have a digital detox and just set some boundaries with my digital devices, then what? Then what's my expectation should look like? What are the time bandwidth I should look towards? Okay. Uh, ठीक है. पहले तो there is no just one thing that you have to do when you talk about drawing boundaries. ठीक है. There are multiple things that you need to do throughout the day. एक जैसे हो गया वही मे बी यूजिंग अ ऐप या इफ नॉट एन ऐप कॉन्शियसली पुटिंग अलार्म ऑफ 15 मिनट्स. ठीक है. अनदर थिंग वही जैसे डिजिटल सॉरी स्लीप हाइजीन मेंटेन करना कि बिफोर स्लीपिंग 30 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड मेक श्योर यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन्स. ठीक है. अब अगेन इफ यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर कि एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, आई थिंक द वे आई वुड लाइक टू आंसर इट इज डोंट एक्सपेक्ट एनी पर्टिकुलर टाइमलाइन. Why? Also because देखो you start putting efforts. There will be days when you will just feel like नहीं आज मेरे को doom scrolling करना ही है, right? So what I am suggesting is this is a process which takes time. It depends from individual to individual. ठीक है. Don't be very hard on yourself. But again, then relating it with consistency. ठीक है. एक हफ्ता 6 7 8 days प्रॉपरली अगर शेड्यूल फॉलो किया बर्नआउट हो गए क्योंकि दिमाग के लिए वो एफर्ट है. बाउंड्रीज ड्रॉ करना उस पर काम करना एफर्ट्स है. और आप वही इफ यू पुट एफर्ट्स एक तो वो हो जाता है कि आई वांट रिजल्ट्स जल्दी. आई वांट टू सी समथिंग हैपनिंग. यू कांट सी इट इज हैपनिंग ऑन द माइक्रो लेवल. आई टोल्ड यू ना कि ब्रेन का फंक्शन ब्रेन का स्ट्रक्चर आल्सो गेट्स चेंज्ड. ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है बट वो हमको दिख नहीं सकता एंड दैट टेक्स टाइम. Hmm. But people say this if you do a habit for 21 continuous days then it becomes a lifestyle. That number of days has changed now in the current lifestyle that we are living in. ये 21 days वाला जो concept था it was discovered बहुत पहले when there were not so many distractions. Oh shit, अब क्या है फिर? I'm doing this 21 days challenge every 3 months. कभी कभी कुछ नई चीज लाने के लिए कि for example 21 days I will start हम्म, reading 10 pages every day and then I will just make it 15 for next 21 days. For 21 days I maybe try to type fast, like how हाँ, many words I'm typing on my keyboard so that my productivity can increase. For हम्म, 21 days, I will just wear a watch every day. Very micro things I used to just हाँ, do. हाँ, yes, yes. So, ये 21 days का बदल कब गया? But yeah, even I did not know. Somebody told me, and then I like researched it back. Now it is something like I'm confused between two dates. It's like either 45 something or 90 something, but it's no Okay, more 21. That I'm pretty sure of. okay, Yes. okay. That's a new insight, guys. Like 21 days challenge जो हम करते थे, I know. Yes. वो बेकार है. वो 45 और 90 days challenge हो गया है. Oh, nearly It's double. something like if you have to do that 21 days ka cycle multiple times to make it a lifestyle. हाँ, you can say that. 21 days के बाद भी lifestyle नहीं बनता है वो. Right. People think कि वो lifestyle ही बन जाएगा. नहीं. It's like breaking your childhood ka patterns. How can that take 21 days? No. So yes, Right. if you ask me any expectation, I'll say it's a journey, guys. It depends from one person to other person. There is no set weeks. There is no set. You'll see some people take 6 years to move on from a relationship. Some people take 6 days. Hmm.
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 6 months वाला was a failure or 6 days वाला was a success, but it all depends on how much effort you are putting, how consistently you are doing that. And Right. one more, even you would have noticed कि बचपन में मे बी डांस करके आपको बहुत अच्छा लगता था, बट अब Hmm. डांस के उतना अच्छा नहीं लगता, अब मे बी यू गो टू द जिम एंड देन यू फील better. Hmm. So with time, as an individual, your own coping methodologies also change. और इन अदर वर्ड्स, आज जो मेरे लिए चीज काम कर रही है जरूरी नहीं है 2 साल बाद वो चीज काम करेगी. इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑल्सो. उसलिए भी हम एक कोई टाइमलाइन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट I यस, द understand that. मोमेंट, Yeah. यस यस, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, यू सी कि अच्छा, कितने बार ये भी होता है हम कोई नया पैटर्न एक्सप्लोर कर रहे हैं, या सॉरी कोई नया एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, 14 दिन बाद ना आप खुद ही बोर हो रहे हैं कि नहीं अब मेरे को जुम्बा क्लास नहीं जाना है, अब मेरे को कुछ और करना है. तो करो, फोकस ऑन फाइंडिंग व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट थिंग दैट आई कैन स्टार्ट डूइंग टू मैनेज माय डिजिटल एक्सपोजर और Right. डिपेंडेंसी, उस टाइप का. सो योर I प्रॉब्लम understand. स्टेटमेंट शुड बी, कब तक चेंज होगा नहीं, योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी, it is a constant effort. How many experimentations can I keep on doing? And I think that answers your question. Yep. So coming to the main core question of it, that what do you think a healthy relationship between digital stuff and personal human looks like? कि ये ऐसी है, कोई हम्म. डेफिनेशन है कि इसकी, या फिर इट्स, if it is different for everyone, what are the metrics that needs to be meet? Hmm. Yeah. ठीक है, ठीक है. I think I'll go with the second one. Obviously, because individual to individual differ करता है. तो better ये है कि maybe if I can give you with some categories or buckets, Hmm. है ना? अच्छा, when you go digital, your brain starts working, right? That is one bucket. मतलब cognitive functioning हो गया. ब्रेन का काम है थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लुकिंग एट इंफॉर्मेशन, स्कैनिंग इट. मतलब मेरा दिमाग पूरे टाइम काम कर रहा Hmm. है ना? तो मुझे कॉग्निटिव ब्रेक देना पड़ेगा, या यू इन अदर वर्ड्स यू कैन से रीसेट. ठीक है. अगेन हेल्दी क्या है, वही डोंट फीड योर ब्रेन सुबह सुबह उठ के एनी नेगेटिव कंटेंट. ठीक है. आधे घंटे में आप करो नेगेटिव कंटेंट, करो कंज्यूम, मैं नहीं बोल रही हूँ मत करो, बट दिमाग को पूरा जाग जाने दो, इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग, so that your cognitive functioning is not impacting your emotions. At the end of the day, remember the 4 pillars I mentioned in the beginning: financial pillar, emotional pillar, relationships, and uh, brain. Sorry, what were the 4 pillars? Physical pillar, psychological pillar, relationships, and finances. Financial pillar. ये सारे interrelated होते हैं. ठीक है. If one of the pillars get impacted, there will be impacts on the other pillars as well. So all of it starts with the brain. ठीक है. तो फर्स्ट कैटेगरी दैट यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इज द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ इट. मेक श्योर टू do some mental activities that give you break from these digital screen times. If you are a quiz person, solve some quiz throughout the day. कभी भी दिन में 5 मिनट सुडोकू सॉल्व करो, पर बुक में, स्क्रीन पे नहीं. ब्रेक लाना पड़ेगा. ठीक है. तो वन बकेट इज कॉग्निटिव बकेट, अनदर बकेट इज रिलेशनशिप वाला बकेट. ठीक है. Okay. Yeah. हेल्दी क्या है? You are not only connected with your family or friends through digital screens. Use digital screens to make plans so that you go outside. क्या है? चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है. अभी आप क्या एक ही रूम में बैठे बैठे पूरे दिन लगे हुए हो, रिलेशनशिप्स मेंटेन्ड है, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं आपके बाकी पिलर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है. व्हाई नॉट गो आउट, इवन इफ इट इज फॉर हाफ एन आवर. एक आई गिव यू एग्जांपल फॉर रिलेशनशिप पिलर्स. इमोशनल पिलर,
make sure, again people will say कि ये meditation बात करते रहते हैं बार बार, साइकोलॉजिस्ट लोग को देख लो, बट इट वर्क्स. ठीक है. नाउ इसमें the catch here is meditation has two forms: formal meditation and informal meditation. You have to see what works the best for you. Meditation का काम है, it helps us to bring our emotions to a neutral state. जो हम पूरे टाइम हाइटेंड इमोशनल स्टेट में रहते हैं ना, सोशल मीडिया यूज करके या किसी भी फॉर्मेट में, उसको आपको न्यूट्रल स्टेट पे लाना है. इट इज मोर अबाउट बीइंग प्रेजेंट इन द हियर एंड नाउ विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो उसमें सब आ जाता है, मम्मी पापा भी एक्सटर्नल फैक्टर ही है. ठीक है. तो फाइंड आउट व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन. फॉर फ्यू पीपल यू वुड हैव हर्ड शॉपिंग इज माय मेडिटेशन, थेरेपी, ये गोइंग टू द जिम इज माय मेडिटेशन, because that person is 100% completely present in that moment. ठीक है. For others it is like literally sitting for 15 minutes in buddha position, cross legged, spine straight, closed eyes. So meditation, again, you know, repeating the same thing. I don't put me as कि यार ये क्या meditation बोलते रहते हैं, but trust me, it works. How is it different? You have to figure out आपका meditation का definition क्या है. So that was emotional pillar. Financial pillar, yes, keep on checking your bank balance, guys. उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं. I think this is something that a financial consultant can help you better with. So yeah, I gave Right. you one example under each bracket ताकि आपको समझ में आए कि इन brackets के हिसाब से the metrics that you were talking about. Yep. Hmm. Yep. Even I will just put my, you can say my perspective on the pillars that you stated. Meditation one especially, because not just psychologists, even any wise person who has achieved anything is a Hmm. reader and a meditator. So that's what I personally feel. Because meditation helps um, to to just reset your brain for a while. You can say कि हाँ Yes. भाई मैं बहुत स्ट्रेस में काम कर गया, मैंने मेडिटेट किया 15 मिनट, नाउ आई एम बैक टू द पावर. Hmm. I will just hit on the ground with more power now. ठीक है. So that's something meditation can help with. Second, about the financial strain, I just have one minor inconvenience with Gen Z, because I am a Gen Z myself in the age bracket. But Gen Okay. Zs are taking loans now to Hmm. travel. Gen Zs are going towards like iPhone चाहिए 20,000 की सैलरी पे. Right. And 20,000, not just like they are living in their own house, they are paying rent, they are cooking their own food, they have travel expenses to go to office, Hmm. on-site role in posh city like Bangalore. वहां पे 20,000 इन हैंड कैश है, महीने में आखिरी में 3-4 हज़ार रुपए भी नहीं बचते, एंड नाउ यू आर पेइंग ईएमआईज फॉर आईफोन 17 प्रो मैक्स. दैट्स समथिंग जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी लेके आता है, और कहीं ना कहीं ये आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, नॉट जस्ट डिजिटल. राइट. Yes. सो these last two pillars are, you can say, more uh, tough for the new generation to handle, I would say. Hmm. Hmm. Yes. So, Yes. meditation is not easy. Getting financial stable is, you can say, you can get financial stable, but uh, With yeah, with time, it requires time. time, dedication, a lot of time, I would say, a lot of time. It requires a lot of time to be like be at a good stage. So, yeah, any last particular advice you want to give to the listeners or so? I think I would like to give the crux of the podcast that we had today, Sure thing. Yeah. more along the lines of uh, wait, you know, something that you can take away as a summary from this podcast is that you, all of us collectively, have to accept that yes,
We are running behind instant gratification. सब कुछ जल्दी चाहिए. So, the reason I am giving this is also it covers the फाइनेंशियल पिलर वाला चीज. क्यों चाहिए तुरंत आईफोन, है ना? वेट कर सकते हो वो चीज. बट क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम है, मुझे दिख रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ओनिंग इट, आई ऑल्सो वांट इट. ठीक है. या वही कपल गोल्स करना है मुझे अपने पार्टनर के साथ. नाउ टैपिंग ऑन द रिलेशनशिप एंगल ऑफ इट. सोशल मीडिया इज देयर, और अगेन एन नंबर ऑफ पिंटरेस्ट इज देयर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आपके पास सारा इंफॉर्मेशन तुरंत अवेलेबल है और आपको सब कुछ तुरंत चाहिए. दैट अर्जेंसी इज द वर्ड आई वांट यू ऑल टू टेक अवे टुडे. क्यों है मेरे को इतना अर्जेंसी? क्रिएट हो चुका है बिकॉज ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन. सो जस्ट बी माइंडफुल अबाउट इट. कि नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्यूचर में नहीं मिल सकती है वो चीज. ठीक है. या अगर ईशान को वो चीज मिला है तो जरूरी नहीं है गुरलीन को भी एकदम, आई डू दिस फॉर 2 days एंड आई विल हैव इट इन माय हैंड. वो एक्सपेक्टेशन है ना. अर्जेंसी स्लैश एक्सपेक्टेशन टू रिसीव द मैसेज तुरंत, टू डू द कपल गोल विथ माय पार्टनर तुरंत. बिकॉज आई जस्ट सॉ इट कि हाँ दे आर डूइंग द ट्रैवल ब्लॉग वेयरिंग सेम कलर क्लोथ्स. नहीं करना चाहता आपका पार्टनर. लेट देम बी. Your partner has some other love language. Comparison. So comparison, urgency, all of these things are the byproducts. है ना, जिसकी वजह से मेरे को भी करना है. So understand that मेरे को भी करना है should not be the problem statement. Like मेरे को भी करना है, क्यों नहीं हो रहा है, is not the problem statement. The digital world we are living in, use it to the fullest, but stay patient with things. Is I think how I would like to, tell people out there who are listening. Be patient. You will not get everything today. ठीक है. अगेन फिर ये नहीं है कि गांधी जी को भी इतने टाइम लग गया देश को इंडिपेंडेंट करने में. ठीक है. बट people who are putting things about their success on social media or whatever you are getting, they have also worked hard. I'll give you a very example, very common example. Instagram pe there is the boho girl, Kritika Khurana or Kritika Khurana. So, she also took time to build her Instagram. She's a lifestyle influencer. She's a fashion influencer. So yeah, go through her success stories also, and koi bhi influencer. Right now you are seeing their success. Again, I'm just giving examples to support the one liner that I'm giving. Ki have patience. You will get it. And at the end of the day, what matters is the resiliency. What is resiliency? The ability of getting back up when you fall down. And you will fall down. Don't expect कि आप fall down नहीं करोगे. गिरोगे. गांधी जी भी गिरे थे. कृतिका खुराना भी गिरी थी. ईशान is sitting here. You also fell. I also fell. Don't stop yourself from falling down. There will be rejections. There will be effort that you have to put. Life is not linear. It's not open. So just be prepared. Just make sure that you stay patient with the process. So, yeah, I think Sure that is thing. what I would tell people. Yeah, even I learned a lot in this conversation. Especially you can say the normalizing factor that is happening in today's world regarding the digital identity. We talked a Hmm. lot of things about AI, about digital, um, like relationships, plus also about the pillars that you stated. So I loved the conversation, Gurleen. Um, Thanks a lot to be on the podcast and looking forward with the new conversations further. Same this side, Ishank. Same this side. Because there is a lot of things going on in the world, and I think I'll really love to be a part of any future conversations or any plans that you come up with. Sure thing, sure thing.